Our off-grid life has taught us a lot. It's been 5 years now, and in the highs and lows and the moments in between, we've discovered the truth about finding happiness. And that is that happiness isn't real. We're told to think of happiness as a state of being, but happiness is an emotion. It is a fleeting feeling that passes, just as anger or sadness, excitement, fear, or boredom passes too. We're all searching for what will make us truly happy, and it might sound sad, but I don't think that we can ever be truly happy, because life is a balance of all emotions. I think instead you can find purpose, and it's different for everyone, but for us, purpose comes from using our hands, from creating or growing our own food. It comes with each tree planted or each fence fixed. It grows from rest as well as work, from joy as well as hardship. Happiness passes as quick as the afternoon sun, but purpose is deeper, and it guides the currents of what you do. This week we've been planting bananas and gardening in the sun, and these simple days of digging, planting, and feeling the soil between our fingers brings us this sense of fulfillment that lasts longer than any emotion. I think that the purpose that we find in gardening can probably be attributed to our human needs to grow, forage, and feed ourselves. Is that not through as well? It's easy to forget that we are animals, and in our privileged lives, our basic needs like food or shelter or sleep have become so effortless, but also so capitalized upon. Instead of hunting or gathering or growing or sharing, we pay money and we receive food. And do not get me wrong, I love these modern privileges, but there's something so lacking about sorting through supermarket shelves full of processed foods from companies whose profits often outweigh their morals. It's the most incredible feeling. You can plant a tiny little pup like this, and then in a year it will give you this giant bunch of fruit. When we grow our own food, we're able to connect with the nutrition that our body needs. We're able to see the rich soil, the saplings who will one day grow tall, the fruit almost ready for harvest, yesterday's rain that feeds the soil, and today's sun that cultivates growth. We're able to see that when we nurture the plants, they return the nurture straight back to us in the form of fresh fruit. We close this reciprocal system, seeing our hands, the dirt, the plants, and the fruit all work in a seamless cycle, a system that gives and receives. Looking at the garden, everything becomes so obvious. The plants don't just need endless sun to thrive, like we don't need endless happiness to be whole. Endless sunshine would actually cause dryness and wilt and slow growth. Instead, plants need days of sun intertwined with days of rain. They need cool seasons and hot seasons. They need a combination of all things working together. A banana plant thrives with balance, so it's strange to think that in order to thrive, we need to search for the absoluteness of happiness and not accept the entirety of life. When people say that they feel happier when they garden, it's not a lie. There's actually a bacterium in the soil which acts like an antidepressant, and it stimulates your brain to make more serotonin. Growing our own food has always been a way that we connect with our body. Movement is so important, and exercise can be great for your mental health. Instead of going to gyms and training with equipment, we love to use these practices to achieve things instead. I always laugh that why would I lift weights up and down and achieve nothing if instead I can catch a bunch of bananas as it falls or haul a bag of duck feed across the paddock? Why would I run on a treadmill if instead I can run after Magnolia's goat as she escapes the paddock or hike up to the highest hill to check the water tanks? We find purpose in these small tasks, in the endless labour and the physical exertion of looking after the land. We find this purpose both by physically working, sweating, and moving our muscles, but also by harvesting the literal fruits of our labour and feeding our tired bodies with their nutrients. This feeling of eating something that you grew with your own hands brings us fulfillment like nothing else. This week we've been trying to balance work and play and cultivating moments of calm into our routine. For me, this means going to a waterfall and exploring beneath the crashing stream.
Invisible connections and harmonious interactions are woven through the earth. Everything in nature has a purpose. Every beautiful thing is laced with meaning. The dragonfly's intricate fairy wings have hundreds of sensory neurons, letting them flutter with grace. The old buttress tree roots collect water for the dry season, as the vines poetically climb through the canopy to reach the light. Between trunks and vines, these dragonflies feed on the insects and will prey to fish and birds. The strength of the vines creates shelter and habitat, while in the tree roots, insects and frogs breed. An invisible web connects every action and movement, every insect, tree, cloud and stream. We have found our purpose within this web, discovering that, like the dragonflies, trees and vines, our actions resonate in the weave of the rainforest. We thread each moment with intention. Our fulfillment grows with every small action, and as they culminate, we discover the happiness that is found in purpose. It is the simple feeling of making change with our hands. With simple contentment, we watch the work we do transform the landscape. We've found that happiness isn't a state of being. It is a fleeting feeling among a sea of emotions. Joy is dictated by passing moments, but purpose is deeper. It is the current that guides the ocean's waves, the birds that spread the forest seeds, or the thread that weaves all of these moments together. As the forest is simply a collection of growth, we understand that our lives are a collection of small moments. Water always teaches us of the complexity of ourselves. It feeds the soils and allows the plants to grow. It gives life, and without it, we wouldn't exist. Water is the core of everything, but also it causes destruction like nothing else. Exactly 3 years ago, these valleys were destroyed in the biggest flood in recorded history, and that day, water became a feared enemy. It carved its own path violently. Anything in its way was torn, shattered, and buried. The waters have taught us that nature, working together, is harmonious, but with imbalance, everything can go wrong. Hey guys, good morning. I hope आप सभी लोग ठीक होंगे. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. And हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं. और आज कुछ अलग डे है. हैप्पी मकर संक्रांति. और अभी मैंने एक वीडियो बनाई, वो आप लोग जरूर देखना. वो मकर संक्रांति फनी वीडियो कहेंगे तो वो चलो अभी मैं बताऊंगी नहीं उस वीडियो में क्या क्या है. और अभी हम लोगों ने बनाई, दादी और मम्मी ने बनाई पूरी और पकौड़ी, है ना दादी? दादी जरा सा हैप्पी मकर संक्रांति बोलो. हैप्पी मकर संक्रांति दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं. हम ठीक है, आप लोग भी ठीक ही होंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो इतना ज्यादा कमेंट करते हो. मम्मी अभी ऐसे कमेंट तो एक भी नहीं आता. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. प्लीज गाइस एक दो कमेंट तो कर लो, मतलब एक दो कमेंट तो ऐसे आ जाते हैं. हाँ, कोई देखता ही नहीं है. हाँ, ये हमारी भी गलती है, हम लोग डालते नहीं है. नहीं, ऐसे तो बोल दे, जो हमारे अपने हैं वो तो कर दो कमेंट कम से कम. हाँ, जो हमें जानते हैं, हमारे रिलेटिव हैं, वो तो डाल, मतलब एक भी नहीं आता. हाँ, ये हमारी गलती है, हम लोग डालते नहीं. गुनगुन नहा क्या है ये देखो गाइस. मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारी कल काय की छुट्टी है पचाने के पकोड़े पचाने के लिए. शायद क्यों? संडे स्कूल कल से खुल रहे हैं, तुम्हारा परसों से अलग खुलेगा. गाइस अभी मेरा भाई और मैं छिल रहे हैं मटर. हमने इतने सारे छिल दिए हैं. मैंने पहले इन्हें तोड़ तोड़ के रख दिया, अब बस इतने बचे हैं. ये इतने सारे थे. और दादी आप क्या कर रहे हो? धनिया काट रही हूँ. धनिया काट रही है दादी. हमारे घर का धनिया है? नहीं. अच्छा, दुकान से लाए. और मटर भी दुकान के होंगे? हाँ. हाँ, लगा मुझे कि हमारे घर का धनिया है. और ये जो भी है वो हमारे घर का होगा. पालक वो भी दुकान का है. सारा दुकान का है. तो घर में क्या बनाया? घर में तो कुछ नहीं लगाते, बंदर खा लेते. है आलू हमारी है, कैरेट हरी है. राई है. हाँ, और
प्याज लगा रखा है। हाँ बहुत कुछ है। मिर्ची है। हाँ मिर्च का तो पूरा भंडार है। लहसुन का थोड़ा कम है। हाँ अभी हमने इतने निकाल दिए मटर। मतलब हम लोगों की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज है ना, अभी थोड़ी धीरे हो गई क्योंकि अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ। गाइस ये दोनों के ये और ये है। दादी ये धनिया है। दादी जी ये धनिया है। वो पालक है, धनिया तो है ही। ये दोनों पालक हैं। ये मतलब ये पालक है, ये धनिया है, ये मेथी है और ये मटर है। और मेरी माताश्री भी आ गई है काम करने, मैट में बैठ गई और ये पूरा कटारा है, कूड़ा कटारा जो मैंने फैला दिया। और वो मटर के छिलके हैं। तो हे गाइस अभी मैं आ रखी बुआ के घर, मतलब मेरी पूरी फैमिली बुआ के घर आ रखी है क्योंकि आज है बुआ और मामा जी की एनिवर्सरी। तो चलो अभी आप लोगों को दिखाएंगे जो जो होगा। और पिछली बार जब मैं आई थी यहाँ मैंने व्लॉग नहीं शॉर्ट व्लॉग बनाया था, उसमें मैंने थोड़ा सा होम टूर आप लोगों को दिया था। तो चलो अभी छोड़ते हैं, अब जब केक कटिंग और चीज़ें होंगी वो बाद में, तो छोड़ो। हेलो गाइस, मैं खाना रोटी बना रही हूँ। ये हमारी सब्जी है, इसमें पनीर है, क्रिस्पी। ये पनीर है। मैंने आलू की सब्जी को क्रिस्पी का, पनीर का है। इस पे रायता है। ये पनीर है। नहीं पनीर यहाँ है। ये क्या है? वो तो आटा है, ये पनीर। क्रिस्पी पनीर इन प्रेशर कुकर। अमेजिंग। और क्या क्या है? रायता है, ये सैलेड है, ये चटनी है। घर की चटनी है। हाँ, इसमें जीरा मैं राइस, वैसे खाऊंगी। ये जीरा राइस है। वाव, और ये यू आर शेफ। ये देखो, ये गाजर का हलवा है। घर में बनाया? अमेजिंग। वाव, बस यही है। आज हमारी शादी की सालगिरह है और ये हो नहीं रहा, बंद है ना? इतना सही खाना बनाया हमने। बहुत है ये, है ना मम्मा? आज मंगलवार है तो इसमें मैं बोल रही मैं बना दूँ। गाइस अभी मैं वहां से किचन से तो आ गई, अभी आप लोगों को ये दिखाना है। ये देखो कितना मस्त लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। ये पानी मन कर रहा है कि इसी में डूब जाऊं, इस फूलों के पानी में। ऐसा पानी सोचा पीने के लिए मिलता तो हाँ, मतलब फूल मुंह के अंदर चले जाते। कितना सुंदर लग रहा है यार ये पानी। कभी कभी बुआ इसके अंदर ना रोजेस डाल देती है। देखो नीचे से कितना ये तो ऐड कर आ जानते पहले मामा को करना, नहीं तो मामा ग्रुप कॉल नहीं उठाना। अरे मैं क्या लगा लूं यार, ये हैप्पी बर्थडे को लगा रही मैं। अकेले एनिवर्सरी केक काट रहे हैं। केक काटने की तैयारी शुरू। हैप्पी एनिवर्सरी जनाब। और ठीक ठाक। हैप्पी एनिवर्सरी। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। हैप्पी एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। सालगिरह की। कतलेआम मचा दिया भाई। हैप्पी एनिवर्सरी। भैया मुंह खोलो। इस प्राणी को किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ पनीर के पकोड़े चाहिए। ये शो चटनी कटर मनी दो।